हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। चलिए आज हम बात करते हैं मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। चैप्टर नंबर 1, क्लास 7th केमिस्ट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। मैटर इज व्हाट? एनीथिंग इन द यूनिवर्स which has mass and occupies space is called matter. The smallest particle of matter is atom. Atom, by the combination of different atoms we get molecule. There are spaces between matter particles. That spaces are called intermolecular spaces, and the molecules combine together by forces of attractions between them. That force of attraction is called intermolecular forces of attraction. Matter particles move continuously. Movement increases with increase the temperature. If we increase the temperature, movement or kinetic energy of the particles of the matter will increase. Matter particles attract each other. Attraction force is highest in solids, then liquids, and then gases. Everything around us composed of matter. We have basically three states. If we included other states, we have five states of matter physically. Solid state, in which molecules are closely packed in a fixed shape and size. Liquids are those in which shape and size are not fixed, but their molecules have more intermolecular spaces than solids. Gases have much more intermolecular spaces between their particles, and they have high kinetic energy. They have no fixed volume, no fixed shape and size. Plasma and Bose-Einstein condensate are the other physical states of matter. Solid phase, permanent change in shape is difficult, negligible, compressible. Compressibility means pushing or applying force of any substance that cannot be pressed. That is called compressibility. All the solids have definite shape, size, and boundary. No particle motion. Liquids, no fixed shape and boundary, have a fixed volume, low compressibility, more than solids and less than gases. Lesser particle motions. They have more kinetic energy or particle motion than solids, but less than gases. Gaseous state, no fixed shape, volume and boundary, highly compressible. Gases exert pressure, high particle motion. Means particle motion means kinetic energy. They can move faster. If you are open a bottle of perfume on a particular place, you will get fragrance of that perfume at very far distance. Here is comparative table in which we will discuss differences between solids, liquids and gases. Solids have definite shape, no definite shape in liquids, and gases no definite shape. Occupies space. All the three state of matter occupy spaces. Definite volume in solids, definite volume in liquid, but gases have no definite volume. Solid cannot be compressed, while liquid slightly compressible, and gases are highly compressible. If you take a balloon, you can compress that very easily. Rigidity. All the solids are rigid, liquids are not rigid, and gases also not rigid. Does not diffuse in अदर सॉलिड्स. अगर आप किसी ब्रिक को लेते हो, उसको ऐसे ही डाल देते हो, वो डिफ्यूज़ नहीं होगी. क्या वो फैल के सारे में फैल जाएगी? क्या नहीं, वो एज इट पड़ी रहेगी. कोई स्टोन लेते हो, वो एज इट पड़ा रहता है. कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लेंगे तो जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उसको आप इवन दैन अपने प्लेस से डिस्प्लेस भी नहीं कर सकते हो. बट लिक्विड्स कैन बी डिफ्यूज़. आप लिक्विड को कभी भी, आप सपोज करो आपने कहीं सरफेस पर भी कोई लिक्विड डाला तो स्प्रेड हो जाता है, फ्लोइंग टेंडेंसी भी होती है, और लिटिल बिट इसके अंदर डिफ्यूज़न भी होता है. बट गैसेस हैव हाईएस्ट मैक्सिमम डिफ्यूजिबिलिटी. अभी एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर आप एक परफ्यूम या कोई किचन में बहुत अच्छा कुछ बन रहा है तो विल गेट फ्रेग्रेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड आइटम फार अवे फ्रॉम किचन. Change of state. A change of state occurs because heat energy breaks the force of attraction between particles. Kinetic energy of particle increases. If you are heating any substance, अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी
इंक्रीज हो जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एंड विद इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स कैन मूव हियर एंड देयर, बाय दैट दे चेंज देयर स्टेट। अगर किसी सॉलिड को आप हीट कर रहे हो, दैट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड ऑन heating will convert into gas. That means the distance between the particles will increase on heating, and intermolecular forces of attraction will be decreases. Afterwards, melting point. A particular temperature at which any liquid is start to change into vapor state or gaseous state at normal temperature and pressure. That condition is called, that particular process is called melting. And the temperature at which any substance is start to boil melt is called melting point. For example, melting point of ice is 0 degree Celsius and 273 Kelvin. Either you can measure in degree Celsius में ये क्या होगा 0 और Kelvin में 273. Latent heat. The heat required to break the force of attraction between the particles at a transition temperature. This heat becomes confined within the material and is called latent heat. Amount of heat required to change 1 kilogram of material to change its state at normal atmospheric pressure at transition temperature is called latent heat for the transition. क्या समझेंगे इसको? अगर आप किसी लिक्विड को, या सपोज करिए आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं, वाटर को बॉईल करने पर आप टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, वाटर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, दैट विल स्टार्ट इनटू चेंजिंग इन वेपर स्टेट। और वही हीट, अब आप उसको कितना भी हीट दीजिए, इट्स कांस्टेंट, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड या सप्लाई की जा रही है किसी स्टेट की, किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज के लिए, फिजिकल स्टेट चेंज के लिए, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अगर आप किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आप किसी सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट स्टेट ऑफ द सॉलिड। सब्लिमेशन, वन अनदर प्रोसेस। अगर आप किसी सॉलिड को नॉर्मली हीट करते हो तो दैट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, एंड अगर आप लिक्विड को हीट करते हो तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन विल बी रिवर्सिबल इफ यू आर कूलिंग एनी vapor or gaseous state, it will convert into liquid and liquid will convert into solid. But sometimes some substances have a greater tendency, special characteristic in which if they heated they converts directly solid into gases and gases into solid. This condition is called sublimation. Conversion of solid on heating directly into gases is called sublimation, and same condition is applicable for gases. If any gas is cooled, its temperature is decreases, that converts into directly into solid. That condition is also called sublimation. For example, कैम्फर आप डेली कपूर यूज़ करते हैं पूजा में, वर्शिप टू गॉड में, वहाँ पे कैम्फर में कभी भी लिक्विड नहीं बचता है। डायरेक्ट कैम्फर के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट करने पर, बर्न करने पर डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नैफ्थलीन बॉल्स जो हम क्लॉथ्स में यूज़ करते हैं, ममाज करती है यूज़, दैट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड टू गैस। Same condition if we have carbon dioxide. On cooling at high pressure, carbon dioxide which is found in gaseous state, it will directly convert into CO2 solid, and CO2 solid is known as dry ice. Effect of change of pressure. If pressure is applied, melting point decreases and boiling point increases. Dry ice is a conversion of gas to solid. So solid CO2 is known as dry ice. So students, I hope कि आपकी समझ में ये आया होगा। अगर समझ में आया, लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।